चलो गए होमवर्क सम चेक इट संभाल के संभालो homework sum clear है सबको? Read out in the homework sum. कोई बोल रहा था टैली नहीं हो रहा है, मन गोगरी हो रहा है टैली नहीं हो रहा है. Check the answers for 14 sum. 14 इसका टैली हो 14 sum का देख लो. पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. I think you have opening stock 9500. Man, बेटा check. Opening stock 9500. Purchase is 29,000 net value. Bila wages 2570. Sales are 38,000. Closing stock is 58,000. Gross profit is 54,930. Bila. On the P&L side, you have discount of 1845. GP is 54,930. Discount is 1845 credit side. You have interest on drawings 400. You got that? And provision for discount, that is NRFDC. Villa 2350. Is that clear? On the debit side, you have got salary 6,000, insurance 2,200, bad debts 1192 net value. Interest on capital is 4,000. Is that clear? Interest on capital is 4,000. Interest on capital is 4,000. Then you have depreciation. That is 4,500. दोनों का मिला के 3,000 or 1,500. And net profit is 36,633. Net profit is 36,633. Is that clear? Hello? Dila? Balance sheet. Final value is capital का 232233. 23, 22, 23. 22, 23, 22, 33. Bills payable is 8,000. Outstanding salary 1,000. Outstanding wages 225. Asset side you have got loose tools 52,000. Debtors 48,608. Bills receivable are 4,000. Furniture is 13,500. Goodwill is 20,000. Bank balance is 30,000. Investments are 20 and closing stock is 58. Tallies on 28610. बोल क्या लोचा हो रहा था on drawings. वही तो main drawings capital. Interest on drawings is P&L credit and subtract from capital. Any other doubt in the homework? 18 देखी बाकी है, बाकी सब हो गए. Hope you have got standard textbook. Put the message late actually in the group. But in the morning at least you check WhatsApp and cancel. Don't feel like the lecture will be there. 18 sir. Tejas Traders Pune. At least one on a bench that you have. I will discuss objectives. चलिए ये सभी खुद से करना है आपको. आखिरी सब अपने नोट्स का पेज 128. I discuss it. देखो ध्यान से guys. Page 128, sum number 18. Please focus. Carriage. Where do you put carriage? Carriage is trading debit or P&L debit. Trading debit. Carriage is trading debit. Opening stock. Opening stock is trading debit. Loose tools.
Come on, please mark fast. Loose tools are assets. Salaries, P&L debit. Wages, trading debit. Printing and stationery. Answer. P&L debit. Discount allowed or received? Allowed. So where it should go? P&L debit. Commission paid or received? कहाँ जाएगा? P&L debit. Commission paid है तो that will go to P&L debit. Commission paid है तो that will go to P&L. आगे पैर लग जाओ. चलो संभाल. Right. Commission paid है तो it is P&L debit. Power and fuel. Power and fuel will go to what? Trading or P&L? Trading debit. Absolutely right. Vehicle is asset. Bad debts. P&L debit. Building, assets, debtors, assets, goodwill, assets, cash at bank, assets, machinery. Come on, assets, 10% investments. Investments are asset, percentage indicates hidden adjustment. Purchases, trading debit, drawings, minus from capital, बहुत बढ़िया, capital, liabilities, sales, trading credit, rent received in advance. Two effects of one cell. Why? मन बोले बेटा जब डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना? तो थोड़ा दिमाग में जाएगा तो थोड़ा सम कर पाओ. इसी बातचीत तो चालू रहेगी पूरी. Rent received in advance is what? Liability. Two effects or one? Why? What is the entry for rent received in advance? वैसे तो cash to rent received in advance. Adjustment entry is rent to pre-received rent. But normal entry is cash to pre-received rent. तो cash to pre-received rent हो गया. Cash में भी record हो गया, pre-received rent में भी हो गया, इसलिए उसे liability में जाएगा. Will you subtract it from rent? Hello? No. अलग है. Bills payable, liabilities, commission paid है, received है ये वाला. ये received है तो कहाँ जाएगा? P&L credit. RDD which RDD is that? Tell me ORDD का effect. P&L debit formula में से minus creditors, liabilities and outstanding salaries, liability. Two effects of one, just one liability. Stock on 31st March 09 was valued at 40,000. Tell me the two effects of closing stock. TC/A, trading credit and assets. Is that clear? Trading credit and assets. Provide for interest on capital at the rate of 5% and interest on drawings at the rate of 8%. This should be clear now. All the three homework sums had this. What are the two effects of interest on capital? Add to capital and P&L debit. And what about interest on drawings? Minus from capital and P&L credit. Last lecture we had discussed this adjustment. Why do you charge interest on capital? होता तो है नहीं कुछ फर्क, जितना है उतना ही रहता है profit. तो why do we charge? Just for the sake of checking whether you are able to sustain this much returns in the business or not. Okay. What about interest on drawings? Why do we keep a track of interest on drawings? Sorry? Keep a control on drawings. Keep a control on drawings. The drawings के लिए ज़्यादा तो नहीं हो रहा है. Just to keep a check on that. Is it clear? So interest on drawing, but interest on capital. Come on, how many months? The interest on capital. Always for 12. Always for 12 months. But interest on drawings just for 6 months. Interest on drawings will be only for 6 months. Is that clear? Hello. Interest on capital 12 महीना, interest on drawings 6 महीना. उसके पीछे भी कारण था, याद है किसी को? Capital is there since the beginning of the year. The drawings are not withdrawn at the beginning. They are withdrawn equally or evenly throughout the period, right? Yes, बेटा, ये सब केजी में होता है. अभी ध्यान दीजिए. अभी goods of rupees 5,000 were dispatched to customers on 30th March, but entry was omitted from the books. What do you mean by this? Goods were dispatched, but the entry was omitted. Recorded purchase or recorded sales? Purchase ना? Dispatch. Absolutely right. English. Okay. आधा इंग्लिश बराबर. Dispatch मतलब
माल गया, डिस्पैच मतलब माल गया लेकिन एंट्री करना भूल गए, दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स. व्हाट विल यू अज्यूम, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स? एंड कैन यू टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ क्रेडिट सेल्स? Add to debtor and add to sales. Debtor to sales is the entry. How will you classify this in the final account? Debtor to sales. Add to debtor, add to sales. दोनों बढ़ेगा. समझे आपको? अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखना है दोनों में. डेटर में भी ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स और सेल्स में भी ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स. इज दैट क्लियर? हेलो, अभी सर debtor में ये आ रहा हूँ. मल्टीपल एडजस्टमेंट्स. आई कम टू दैट. Provide 5% RDD on debtors. What's that? NRDD. What are the two effects of NRDD? P&L debit and debtors में से minus. Goodwill to be written off by 25%. What is that written off? Depreciation. 25% goodwill by depreciation. क्या करोगे? Effects? Minus from goodwill and P&L debit. Minus from goodwill and P&L debit. Goods from 2500 were distributed as free samples. Goods distributed as free samples. Come on, Vivanti. Trading credit and P&L debit. P&L debit advertisement. Trading credit and P&L debit. Now, if you check debtors, first of all, there are two adjustments on debtors. Yes? You have got unrecorded sales and you have got NRDD. Use your logic and tell me which one is. Why so? पहले NRDD किया तो नहीं चले? Exactly. Thumb rule of debtors, Varshvardhan, याद रखना. Thumb rule of debtors is what? Debtors में अगर multiple adjustments है ना, तो अनरिकॉर्डेड सेल हुआ, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न हुआ, वो सब कचरा पहले खत्म करो. लास्ट में एफबीडी, बाद में एनआरडीडी और बाद में एनआरएफडी. एफबीडी, एनआरडीडी, एनआरएफडीडी ऑलवेज एट दी एंड. ऑलवेज. जैसे डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एट दी एंड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, वैसे डेटर्स पे एफबीडी, एनआरडीडी, एनआरएफडीडी ऑलवेज एट दी. Or you got that? So पहले unrecorded sales, फिर NRDD. There is no FBD. बोलो, any doubt in that? Sorted है सबको. अभी नोट बनाना है आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का. हिडन एडजस्टमेंट है. मेक दैट नोट क्विकली. फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट. सीसीसी करना है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है. 12,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 months. 12,000 का 10% for 12 months. I think it comes to 1,200. Check करो. 12,000 का 10% for 12 months. That comes to 1,200. Right? मिला? 12,000 का 10% for 12 months. That's 1,200. इतना इंटरेस्ट पे करना है कि रिसीव करना है? इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा कि दोगे? मिलेगा. तो रिसीव करना है. और चेक करो, हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट? यस? नो. नो. ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ थिंग्स एनीथिंग इज देयर, राइट? सो एंटायर इंटरेस्ट इज व्हाट? रिसीवेबल. हेलो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? इंटरेस्ट रिसीवेबल, P&L credit and add to investments under assets. P&L credit and add to investments. Put dots. 2 dots on capital. Why 2 dots on capital? Interest on capital and interest on drawings. Advertisement नहीं तो अलग से लिखने का. 2 advertisement या 2 for examples. P&L debit. 2 dots on capital. 1 dot on sales. 2 dots on debtors. Why 1 dot on sales? Unrecorded sales. Why 2 dots on debtors? NRDD and unrecorded sales. पहले unrecorded sales, पहले NRDD. Goodwill पे 1 dot. Goodwill पे 1 dot. And investments पे 1 dot. Goodwill 1 dot and investments 1 dot. Come on, start. 20 मिनट. Hopefully आपके होमवर्क सब हो रहे उतने टाइम में कि नहीं हो रहे, I don't know. But पूरा सम 5 मिनट कॉलम्स, 5 मिनट टैलिंग, 5 मिनट मार्किंग और 20 मिनट पोस्ट. 5 minutes for tallying, 5 minutes for marking, 5 minutes for columns, and 20 minutes for the problems. 35 minutes मिलेगा. Test is there on this Sunday.
प्रिपेयर अच्छे से. सीधा लाइव रेंट में कुछ नहीं होता, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन इधर अलग से एंट्री हो चुका है ना. कैश टू प्रीवियस रेंट हो चुका है, स्ट्रेट लाइव. सीधा लाइव रेंट रिसीव इन एडवांस स्ट्रेट लाइव लिखी, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, माइनस नहीं करना. अलग एंट्री हो चुका है, कैश टू प्री रिसीव स्ट्रेट लाइव, ओनली वन है. Yes, P&L credit and add to investments. P&L credit and add to investments. Outstanding receivable. सारा एडजस्टमेंट्स आपको इंट्रो पार्ट पे दिया हुआ है. एग्जाम से पहले पूरा फॉर्मेट, पूरा एडजस्टमेंट रिवाइज करना है अच्छे से. Rent received in advance. हाँ, तो आवर्स में इनकम रिसीवेबल होता है. વધારે આવી જાય તો આવર્સની ઇન્કમ નહીં, પોકેટનું ટેક્સ ભરતો હોય.
Sorry. Yes. Outstanding is a receivable check. Add to investment and asset. Investment में dot किया. Add to investment और इधर P&L credit by outstanding. मिलना बाकी है वो समझा? Calculate check कंपेयर. Invest किया तो इतना मिलना चाहिए. मॉड्यूल का ही ना. आइनर कॉलम का 12,000 plus 1200. Asset में inner column dot है. और उस पे ऐड आउटस्टैंडिंग तो 1200 मिलना चाहिए था, 1 रुपया भी नहीं मिला तो पूरा 1200 आउटस्टैंडिंग हुआ. ऐसे तो लिखा P&L इनकम रिसीवेबल पता है, ऐड टू इनकम एंड एसेट्स P&L क्रेडिट एंड एसेट्स. जब रहा है सम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना महीना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ रहा है अमाउंट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए 125 ओ सॉरी 200. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट शुड बी 200 रुपीज. डिड यू गेट इट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोर्ड पे देख लो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे लेगा? 5,000 पे 8% फॉर 6 months 200 आना चाहिए. और व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 18,000 का कैपिटल है मिला. हेलो 80,000 पे 5% है ना फॉर 12 months 4,000. Interest on drawings, interest on capital. Just check. Finish it off. ऐसे मत है ना GDAFS कुछ नहीं मिलेगा. हाँ. Advertisement इधर भी है ना. अलग थी ना. Two advertisement या फिर two free सा. वो है ना. नहीं अलग. Goods distributed as sample clear है. Trading credit buy goods distributed as free sample and P&L debit to advertise. है एडवर्टाइजमेंट तो ऐड करो, नहीं है तो अलग से टू एडवर्टाइज. Free sample आपको